Thank you, sir. Good afternoon and namaskar, everyone. And so we are all here and to this beautiful, bright afternoon, and it gives me immense pleasure to be part of this and to speak on various issues on the mental health. And this is the National Convention on Common Emotional Behavioral Concerns and Allied Learning Disabilities, envisaging the triad model of school mental health initiatives. So when we look at these some interesting data on mental health, we would see that an estimated uh, percentage of 10 to 20% of children and adolescents globally experience mental health conditions, and yet these remain underdiagnosed and undertreated. And in addition to this, around 70% of mental health problems begin in childhood and they carry on till adolescence period, and then again they reflect badly our lives in adult life. And 1.2 million of children and youth are affected by mental illnesses, and unfortunately only 1 out of 5 gets treated. And the list goes on if you look at the data and analyze it. But when we look at children and adolescents, we know that childhood is one of the most crucial period for developing, maintaining, learning, emotional habits, academic and cognitive development. So, and it actually makes the foundation of our life, early life, and then adolescent and adult life. So, it basically is this period is marked by transitional phases of growth and development between childhood and adulthood. So, childhood comes to be one of the center stage when we see children in school, when we handle them in our social sphere. And as per WHO, any person who's between ages 10 and 19 is adolescence, and adolescent marks a clear cut period of development which is physical and the changes are rapid. And similar is the childhood time. So childhood time is basically the first 5 years. When we look at them, are the critical period for learning emotional, academic and social etiquettes and social behavior. And when we look at these children, we need to really invest a lot of time in their holistic development, which is not only just the academic, which is basically have been traditional focus in our Indian social systems and Indian schools as such. But we definitely look forward as we are definitely changing our outlook towards these things. For us, actually mental health is becoming very important. जिसको हम बोलते हैं मन का खुश होना बहुत जरूरी है यहाँ पे. हम जरूर देखते हैं कि हमारे बच्चे की इमोशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग जो है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी चल रही है, वो हमको जरूर देखना चाहिए. और आजकल जो भी आप टीचर ट्रेनिंग्स और प्रोग्राम जब देखते हैं, और स्पेशली ये पैंडेमिक जो कोरोना पैंडेमिक जो आई है, इसकी वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा फोकस बन गया है. हम सबका रुझान इसकी तरफ है. हम जरूर देखते हैं कि ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई, हर एक कोई जब इस पैंडेमिक के से जब गुजर रहा था और गुजर रहा है अभी भी, तो देश में इस चीज के ऊपर हमने बहुत चर्चा छेड़ी और इसको लेकर हमने काफी कुछ बातें करी. सो अगर हम देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, 1/4 पॉपुलेशन जो आती है, जनसंख्या जो है वो यंग है. ये यंग एडल्ट्स की आती है, यंग पॉपुलेशन की आती है. तो हमें उनके डेवलपमेंट को देखना बहुत जरूरी होता है. उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल, उनको एक रेगुलर फिजिकल वर्कआउट और कोपिंग मैकेनिज्म एंड एक हेल्दी मेंटल हेल्थ देना बहुत जरूरी हो जाता है. तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो बच्चों को हमें एक जीवन कौशल की भी चीज बतानी पड़ती है. तो जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर हम उन्हें हमेशा स्पून फीडिंग करते हैं, हर हर चीज उनको हम आसानी से दे देते हैं, तो बच्चे एक्चुअली उनमें ना सीखने की कमी रह जाती है. तो जब वो चीज आती है तो हमें
उस समय बच्चों को जरूर देखना चाहिए। चाइल्डहुड टाइम में, बालावस्था में हमें देखना जरूरी होता है कि बच्चे लाइफ स्किल्स सीखें, जिसमें आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर बच्चे के सामने कोई समस्या आ रही है, इफ द प्रॉब्लम इज देयर, द चाइल्ड शुड बी एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, think a little about the problem, try to solve it on his or her own. Then comes critical thinking, which is again very important. Then comes communication, मतलब संचार, आपस में एक दूसरे से बात करना, अपनी प्रॉब्लम, समस्या को दूसरे के पास पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चे के लिए। फिर एक आता है इमोशनल रेगुलेशन, उसका अपनी भावनाओं पे कितना कंट्रोल है, जो कि बहुत जरूरी होता है। चाइल्डहुड में, प्री स्कूलर टाइम से बच्चे के अंदर एक जो इमोशनल रेगुलेशन आ जाता है, जहाँ पे हम बच्चे को सिखाते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को कैसे, आप अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हैं, मतलब कैसे आप अपनी इच्छा को थोड़ा सा रोक के आप अपना टर्न का वेट करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। एंड एम्पैथी, which is actually very important thing in today's world. We must teach them empathy, we must teach them resilience, कि किसी भी समस्या के सामने हारना नहीं है। कोई समस्या है सामने तो उसको हमें कैसे उससे लड़ना है, उसे हमें कैसे जूझना है, बहुत जरूरी है। और कैसे सबके साथ मिलजुल कर कोलैबोरेट करके रहना है, लीडरशिप क्वालिटीज। फिर आता है उनका पेयर रिलेशनशिप, विच इज अबाउट देयर social relationships, their friends, their own how to handle their peer pressure, ये बहुत जरूरी चीज है। So जब ये सब चीजें हम देखते हैं, when we see look these issues in children, so emotional and behavior जो issues आते हैं, which are generally staring at us when we don't handle all such things at childhood, when we don't give them enough training, we don't empower them enough, we don't talk to them about these things, then we definitely get into these emotional and behavioral concerns which uh, stand in front of us and which we need to really handle when it comes. But then we also need to look at certain reasons why these things are happening, you know. So because of the traditional Indian setup, Indian households, if we see, there are different rearing practices which are there across our country. There could be a reason of maternal psychopathology which is there. There could be poor parental rearing practices. There could be relationship issues between the child and the parent. There could be relationship issues or marital discords between the parents. And of course, due to malnutrition, due to other issues, genetic factors, there could be developmental delays also present at times. और इसी वजह से कई बार हमें बच्चों में मानसिक समस्याएं दिखती हैं। और ये जो है अक्सर उनके व्यवहार को लेके होती हैं, अक्सर उनके इमोशनल नेचर के को दिखाती हैं। तो इनमें अक्सर आप देखेंगे कि बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज की वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और कई बार बड़ा चैलेंजिंग बिहेवियर दिखता है बच्चे में। बच्चा बहुत बिल्कुल कहना नहीं मानने की स्टेज पे होता है, ऑपोजिशनल डिफायंस की चीज आती है उसमें। कई बार बच्चा जो होता है वो समझ नहीं पा रहा है क्या चीज है, स्कूल में उसको बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। सो उसकी वजह से उसको अक्सर लर्निंग डिफिकल्टीज आती हैं। सो लर्निंग डिफिकल्टीज जो है, जो भी 1 in 5 इन एवरी चाइल्ड इन स्कूल सेटिंग अगर आप देखेंगे तो हर बच्चे में आपको ये समस्या नजर आएगी, सीखने की जो इश्यूज हैं, which is very evident, which is very common in our school setting. But we need to observe them from the early age, which is very important. So here comes early intervention, which is key to success in dealing with learning difficulties. So there are different kind of learning disabilities, and learning disabilities है क्या, ये क्या चीज है, ये कुछ इसमें बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल way to put it across is it's a group of neurological disorders, and basically due to the different wiring of the brain these children have. They are very smart, they are as smart as their peers, they are sometimes smarter than their counterparts in school, but only difficulty they find is in learning, which could be writing, reading, there could be learning the spellings, there could be recognizing the symbols of languages, there is a recall issue, there is an organizational issue in terms of the information. And this really causes a lot of problem in children when we handle them in school, and this causes issues and emotional issues when we see such children, because it becomes a real pressure for them to handle, because they are being
noticed and they're labeled at various settings in school, at home, because people are not aware about such things. So when it comes to learning disabilities, there are basically 7 types of learning difficulties which we see, which is dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, auditory processing disorders. Then comes language processing disorder. Then non-verbal learning difficulties which are there. There could be visual, perceptual, and visual motor deficits which are commonly present in children. So they cause a lot of issues in children when they grow up, and also in school population. So now we need to also look at the plan which is generally there in children. With these problems are there, and children are supposed to be looked at in a very correct manner. We should have certain plans in place to handle such issues, which could be emotional, behavioral issues, and these learning issues which are there. So we need to have a constructive plan to tackle such things. So today we are here to have discussion and insights on the above mentioned things and issues. So it's over to you, Rushi ma'am. Yeah. Hello, yeah. Thank you so much. I'll just formally introduce. Thank you so much. I was listening to Himaji, and thank you for the introduction. It's a lovely moment, and Merry Christmas to all the audience across the country, respected teachers, students, and counselors. What an important introduction given by Himrata ji. And we are so profoundly happy to have our key resource person, I would say Professor Ruchi Tamanna ma'am. She's been a great teacher of all seasons, a researcher, a trainer, working with the Government of India at the RML Hospital, New Delhi. Ma'am, you've been able to give us a huge amount of lead in terms of what kind of research in school mental health can take shape in the years to come. And I'm sure this international summit, which invites the attention of a large cross-section, socio-cultural diversity in India, and will help us to formulate certain guidelines which we are already working upon, and give it for the schools and give it for the universities also in India as far as mental health services are concerned. One was this point. Second point, what I could hear is the triad model. I just heard about the triad model. इसका मतलब क्या है? Triad model implies that we are all bound and duty bound to promote a happy, gratitude-ridden atmosphere in the school, a climate building जो होता है. So a preventive and a promotive approach, which is a ambience creating for a joyful classroom and a joyful school. That is a key responsibility of every teacher, every stakeholder, including the mental health professionals and all guardians and parents, to create that comfortable zone for each child going to the school. The second part of the triad is to identify early, identify those who need additional help. And I think today's workshop, a very, very interactive workshop between our two resource people. We also have very familiar resource person here, and very bubbly resource person, Prajita Dikshit. She's been also coordinating the entire summit progress. Thank you, Prajita, for being with us. Noted child and adolescent psychologist. So that interaction between our two resource people will help us to identify early those key signs and symptoms where every teacher can help within the classroom, within the school, and also within the atmosphere where the parent and the school partnership can be promoted in a more viable manner. Third part, very crucial part of the triad. Are we ready for linkages? Are we getting prepared for the 21st century schools to draw linkages between the school and the professional facility outside the school? Now, this is a challenge to our country, a big challenge, because the manpower is very less. We have very less number of people who are dealing with the child and adolescent mental health issues. Therefore, the role of a teacher as a counselor, the role of a counselor as a professional, and the role of school leaders in giving importance and giving due regard to the existence of mental health services in the school. I think that comes under the third part. So we are going to see a span of toddlers to 10 years, say about early childhood and middle childhood, and common issues, concerns related to that. I invite Dr. Rushi to now take the lead
and then we will certainly like to have certain recommendations, certain queries from teachers on the email. You may send it to us today, tomorrow, till the end of the summit. All these queries are getting answered gradually. We are compiling the data as a research also. What kind of challenges, difficulties, manpower problems all the schools face at time, and how the good practices can be adopted by certain schools following the example of other schools. So we are going to have a good discussion on the policy standards also, the practices also. Over to you, Dr. Yeah, Rushi ma'am. sure. Yeah. Yeah, thank you so much, Dr. Nagpal. It's really my pleasure to interact with you all. I mean, because I've come to know that there are thousands of students who are part of this program right now. There are hundreds of teachers and counselors who are attending this program. So I am it's my pleasure to be part of this program by now. And I would like to congratulate you, sir. I would like to congratulate Dr. Nagpal and his team, Expression India, to take this initiative, like always, putting so much concern and commitment to the mental health and well-being of the children and adolescents of the country. So coming to the discussion, from where ma'am had initiated that school is a place where you get the major chunk of your education. But it is very unfortunate and very sad that there are several essential skills which are never taught in our school. So I am not talking about the schools who are part of part of this program, who are on this platform, because if we will talk about Delhi, so with the initiatives and help by the Kejriwal, there are many happiness programs which are going on in various private and governmental schools. But there are several schools apart from Delhi in India where there is no concept of any mental health and well-being. The people are not aware of these things, that children and adolescents, they do really have some emotional or behavioral kind of issues. So why I was congratulating Expression India, because they took this initiative long back, I think 9 and 10 years ago, when they started this life skill training program and peer education program so that, you know, these are the skills like empathy, conflict resolving skills, like ma'am was talking about, the negotiating skills, which are so important. These are extremely important because, you know, these are the skills which are the skills for the real world. What real world means, that these are the practical skills which are required to deal practically with your environment, to operate with your friends, your peer group in the classroom, to operate at your workplace in future, how you will interact with your colleagues in the college. So there are various these kind of skills which have become part of this life skill training program. You people will be learning, and definitely with the introduction of this peer education program, I mean, a lot of development, a lot of improvement is there in so many schools in Delhi, and of course, apart from Delhi. But this is really unfortunate. We will come later part of the presentation, you know, we'll come to this discussion, what sir was talking about, the linkages and some of the policies, what are the drawbacks which are lacking behind. But there are many, I mean, if you will talk about Delhi, so there are plenty of schools who are the government school who don't have these concepts. They don't have any special educator or a counselor in the school. So outside the Delhi also there is a picture, but fortunately the schools who are participating here say, so they do have this concept. बट इससे ज्यादा आगे बढ़कर भी हमें और बहुत बात करनी है about the mental health and well-being of our children, because the mental health issues of our children and adolescents, they not only have adverse impact on their academics, you know, on their learning process in the classroom, but they also have adverse impact on the functional outcome into the adulthood. And now there is a lot of research which indicates that significant proportion of mental health problems in adults, they tend to have onset in the childhood and adolescence. So that is the reason that we should talk about important
behavioral and emotional issues, what are the emerging issues among those children. So coming to the so I think like adults, these children and adolescents, they also have experience, they do experience many disturbances in their emotions, behavior, relationships, which impair their functioning. But as an adult, we are not able to make out. Yeah. So what happens that if as an adult, we were having those mental health issues. So if I'm having depression, or I'm feeling anxious, or I'm having some anxiety, or I'm feeling distress, so I will go, so there will be, help seeking behavior. I'll go and consult somebody. So there are a lot of people in adults who would like to contact people, who either they will like to contact their friends or their teachers or the counselors in the schools. Adults जो है वो mental health professionals को contact करते हैं, but there are many students in the classroom who are experiences these kind of issues. They sometimes they feel depressed, they have sadness of mood, they feel hopeless, they feel anxiety, they have so many learning issues, like ma'am was talking about dyslexia. There were so many academic issues like specific learning disability. And so what happens, so whenever the child will have any issue which is related to his academic, if they're having any issue which is related to peer groups, they are being bullying, और या कुछ इस तरह के कभी कभी इश्यूज होते हैं कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे कोप करना है क्लास में बच्चों के साथ या टीचर्स के साथ. द चाइल्ड इज बिकमिंग aloof, his interaction pattern is decreasing day by day. So sometimes we just ignore those issues. तो क्या होता है बच्चों में क्लासरूम में, so if one child is seeing a child who is sitting alone, he is not that child is not able to mixed up with other kids. So usually what is the reaction of other children? Oh my God, what happened to this child? He's always looks so sad. People, they don't like this person in the class. Oh, that is the reason when I don't like this person. It is, and that is the reason that I don't want to talk to this person. So, empathy. So here, what is the skill which is lacking? So empathy is lacking, so that's why ma'am was also talking about these primarily important skills which are important to introduce in the school. And this is very unfortunate that our kids in the classroom, they are not able to learn these skills. We always give so much focus on the academic grades. बस बच्चों को पढ़ाना है और they should do well in their academics. But we ignore all those skills which are helpful not only to themselves. So empathy मेरे अपने लिए भी important है और साथ में मेरे आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी important है. Only then I will be able to realize that what kind of disturbances in their emotions and behaviors or relationships these people are having, which is impacting their academics, and which is impacting their relationship with their teachers, their parents, and their authorities and their peer groups. So it is distressing to them as well as to the parents, right? It is distressing to the community. So इसीलिए that's why we were always talking about the early identification and early intervention for these kids. तो पेरेंट्स के लेवल पर, टीचर्स के लेवल पर और फिर काउंसलर्स के लेवल पर हम कैसे पहचाने कि वो क्या इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज बच्चों में हो सकते हैं which can lead further to some disorders in their adolescence or adulthood. So I think emotional and behavioral difficulties, it is important for you to know that they may be process because of the normal developmental process. So there are various developmental processes. Aparajita, am I audible? Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Okay. अच्छा. So यहाँ पर कुछ वो disturbance दिखा रहा था. No, and they may be due to some disorders also. So right now, we are not going to talk about the disorders. अभी हम सिर्फ बात हमारा डिस्कशन यहाँ से शुरू करेंगे कि वो क्या डेवलपमेंटल प्रोसेस है, क्या नॉर्मल डेवलपमेंट होता है और कहाँ पर वो एक रेड फ्लैग्स हैं जहां पर हमको अलर्ट हो जाना चाहिए that the child is deviating from that normal process.
So some of the disturbances in emotions and behavior are developmental in nature. So that is they are the part of the normal growing up process, right? So physical, behavioral, and emotional changes, which not only lead to the normal growth and development of the child, sometimes they are they create distress in the child also. So because sometimes what happens that the child, they become confused, they become irritated, and they are upset about those changes. So for that matter, it is important for the child or the adolescent to understand the developmental process कि कौन सी ऐसी चीजें हैं which are part of the normal developmental process. बहुत सारे rapid हम लोग हमेशा बात करते हैं जो physical changes हो सकते हैं. So we have to understand those changes. But on the other hand, there are some of the disturbances in emotions and behavior which could lead to some disorders like ADHD, inattention, hyperactivity. तो ये सब बहुत ज्यादा common है बच्चों में. Then learning disability. So आजकल तो there is lot of, because over reporting of learning disability, so you will find there are a lot of kids in the class who are having problems in their academics. They are having good IQ, but they are not able to score good marks because of the problems in their reading, writing, or arithmetic, or and because of these problems in their academics, they further have some emotional and behavioral issues also. We'll come to that when we will be covering the section. So I think that is the reason that it is important to distinguish whether the disturbances in the child is due to the normal growing up process or whether the child is having a disorder. So abhi initially I think हम लोग हमारा discussion इसी के ही आसपास रखें, so that will be good. So now coming to the domains of the development. Normal development occurs simultaneously across various domains. So you need to understand those domains. So what happens कि सबसे पहले अगर हम बात करें एक infant की from 0 to 2 years, so the first 2 years of the life are a period of rapid growth and development, and which is evident in the physical growth, language growth, and cognitive development. तो इसीलिए जब हम schools, I mean this is for the school teachers and the counselors. So whenever आपके पास तो बच्चे हमेशा 2.5 साल के बाद आते हैं, but just for a brief review, अगर हम छोटे बच्चे की infants की बात करें, क्योंकि हमारे पास हम clinical, see I'm a clinical psychologist, so at clinical level we do get children from birth till this infancy years of which lasts for 2 years. So what do we see in the normal process, that whether the child is having any deficit in the physical growth or in the language part or in the cognitive development. तो ये चीजों को तो हमें explore करना होता है 2 साल से पहले के. लेकिन but when the child is entering to school, which is the pre-toddler, और हम pre-schooler की बात कर रहे हैं, जब बच्चे का admission school में होता है, तब हमको कौन सी वो चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है. Because now the child is trying to explore the environment. So physical development moves at a slower and steady pace by this time. But the cognitive and social abilities, they develop significantly in this phase. So उसके बाद जब आता है middle childhood की हम बात करते हैं, that is from 6 to 12 years. Right? So this is a very critical period जहाँ पर बहुत सारे emotional, behavioral issues आपको बच्चे को देखने को मिलेंगे. Not only that, you will see so many issues in their academic areas also. So because children, they become independent in their self-care skills, they are able to communicate to other people. So now they are in formal education. So this is the time when you can notice, where you can notice some of the problems if the child is having difficulty in reading, writing, or arithmetic. So by the age of, it is previously it was 5 years that we used to detect SLD among the children, but now as per the gazette, as per the guidelines, we cannot diagnose a child with specific learning disability. But of course, this years from 5 years to 8 years, these are very significant and crucial, where you can identify, you can make out that the child is having any specific learning problem or not. So this period, this toddler period give them increasing opportunity to interact with their peer groups. So they expand their social culture, social circle, and so basically child lives in a
environment which is beyond the immediate family. So that is why this is the period that, lot of emotional and behavioral issues occur, but because अब वो उस protected माहौल में नहीं है ना, बच्चे 3 साल से स्कूल जब जाना शुरू करते हैं, और ये जो 12 साल तक का एक मिडिल चाइल्डहुड का सफर है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर आई थिंक द रोल ऑफ द टीचर एंड द काउंसलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे हैव टू पे special attention to these children, that what are those deficits in their social and emotional development, वो क्या challenges बच्चे face कर रहे हैं, जहां पर हम उनको मदद करके, उनको help कर they can perform good in their academics, they can perform good in their relationships, and they feel happy, और उनकी एक हम functioning level को भी during the adolescence और adulthood में आगे बढ़ा हैं. इसके बाद अगर हम ब्रीफली बात करेंगे तो एक एडोलेसेंस की हम बात करते हैं जो 13 to 18 इयर्स में होता है, जिसको जहां से उसके बाद फिर एडल्टहुड शुरू होता है. सो बिकॉज दिस इज अ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, सो यहाँ के अपने इश्यूज होते हैं बच्चे में, जो रैपिड सोशल इमोशनल साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उनका इम्पैक्ट बच्चे की साइकोलॉजी पर पड़ता है. So what is important is, by this period, you have to give lot of attention to their self-esteem issues, because, their self-esteem fluctuates. It is influenced by so many factors, as their academic work. अगर मैंने क्लास में अच्छा नहीं किया, I am not performing good in my academics, so my, image, my reputation, जो है वो affect होती है उससे. My reputation in front of, in the eyes of other kids, in the eyes of the teachers. And what is apart from this academic performance, what is important is peer relationships, romantic relationships, and social competency. I think इन सब चीजों पर हमें थोड़ा सा अगर हम फोकस करके चलें तो ये पीरियड भी बहुत आराम से बच्चों का निकल सकता है. So I think a brief description of important milestones which are achieved at each stage is important to know us, that what are the warning signs, what are the red flags which can be identified early for in the developmental process. So we will keep our discussion on this series only. And I would also like you to know that some of the significant developmental milestones during the middle childhood, जो हम स्कूल एज की बात कर रहे थे आज, जब बच्चा एक का एडमिशन प्ले स्कूल में होता है, और जो वो पूरा एक मिडिल चाइल्डहुड का सफर 12 साल तक का सफर तय करता है, तो टीचर्स और काउंसलर्स को किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए. सो अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि इस पीरियड में होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, बट दैट अकर्स एट अ मच स्लोअर एंड स्टडी पेस. And by the age of 9 years, both girls and boys, they do start have pubertal changes. And because of these biological changes and hormonal changes, there are a lot of emotion, they have a lot of impact on their emotions and behavior. So I think as a teacher and counselors, एक तो हमको वो समझने की जरूरत है, और बच्चों को खुद भी ये समझने की जरूरत है. अचानक से एंगर आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट जो हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? समटाइम दे आर पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस, क्योंकि ये सब जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इनकी वजह से हो रहे हैं. तो हमें ये समझने की जरूरत है और यही समझाने की जरूरत है. देन कमिंग टू द सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, देन डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एस्टीम, आई थिंक उसको हम सबको मिलकर बच्चे को मदद करनी है. सो ग्रेजुअली हाउ दे कैन गेट बेटर सेल्फ कंट्रोल, हाउ दे कैन डिले द ग्रेटिफिकेशन एंड द इम्पल्स कंट्रोल. दिस इज द टाइम व्हेन दे लर्न टू रेगुलेट देयर इमोशंस, राइट? सो इमोशनल रेगुलेशन डेवलप्स ओवर द इयर्स, लेकिन शुरुआत जो है वो यहाँ से हो जाती है. Then of course empathy and perspective taking also improves by this age. तो अगर teachers और counselors थोड़ा सा empathy और ये इन सब चीजों पर हम इसके development पर और अगर हम थोड़ा सा focus करेंगे, so that will be helpful not only for the child, but that will be helpful for the entire classroom, like I was giving you example initially, right? Then development of a sense of self, of course, is very important, and cognitive development is also very important, because what happens that attention span improves by this age.
ठीक है, लेकिन यही एक पीरियड होता है जब हमें इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, लर्निंग इश्यूज सारे देखने को बच्चों में मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वो एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी डिवाइडेड अटेंशन, फोकस्ड अटेंशन, ये सारी चीजें भी इंप्रूव करती हैं। बट अगर हमें लग रहा है कि बच्चे का अगर उतना अटेंशन स्पैन नहीं है, बच्चे में इनअटेंशन है, तो फिर उसके लिए हमें कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करें, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चे को। बिकॉज यू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ अटेंशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ADHD, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम एज अ डिसऑर्डर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट एज एन इशू। लेकिन इनअटेंशन के इश्यूज तो बहुत जबरदस्त होते हैं बच्चों में, बड़ों में भी होते हैं, बस मैनिफेस्टेशन अलग होता है। बच्चों में कैसे दिखता है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं तो अटेंशन स्पैन कम है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, so they are not able to complete their task. So lot of teachers who are sitting here or the counselor, they must be aware of this thing ki there will be some kids who will be very hyperactive, they will jump from here and there, they will not remain on their seats for a long period of time, they will not wait, so there is so much of impulsivity that they will not wait for their turn, राइट तो बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चे जो छोटे हैं उनमें तो इस तरह से देखने को मिलती हैं। बट एडोलेसेंस और एडल्टहुड में क्या होता है, इफ देयर इज सो मच ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन और आई एम नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड इन माय वर्क, सो दैट इज आल्सो अ इंडिकेशन ऑफ इनअटेंशन। बट तो ये तो लाइफ लॉन्ग भी परसिस्ट करता है, इम्पल्सिविटी होती है। आप कभी कभी लाइफ में व्हेन वी डू टेक रैश डिसीजन, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग पुअर होता है, इम्पल्स कंट्रोल पुअर होता है। सो ऑल दीज आर साइंस ऑफ दोज inattention emerged in the childhood. तो आई थिंक उसी सफर में अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लें और उसको मैनेज करने की कोशिश करें, तो बड़े होकर, मतलब हमारे एडोलेसेंस में और हमारे एडल्टहुड में, I'm sure that it is not going to create any hurdle. So और क्या होता है, हमारी रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप हो रही होती है। सो एज अ टीचर वी हैव टू बी अलर्ट फॉर these abilities also, whether the child is having adequate attention and concentration, whether the child is able to use those logical thinking or reasoning skills, abstract thinking develop ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, or whether they are able to understand the metaphors, or whether they are able to know the to comprehend the double meanings, what जो भी peer group में उनकी बात हो रही होती है, or they are able to maintain peer relationships. So because peer relationship की बात जब हम करते हैं, so I think this is very important. बहुत सारे adulthood disorders में हमें ये देखने को मिलता है कि it was during this time in their childhood, when the child is in class 3, 4, 5, 6, 7, 8, if their relationship with their peer group are disturbed, because उस वक्त तो ये नीड बहुत हाई होती है ना, घर से बाहर आ गए, अब घर वाले रोल मॉडल नहीं है, हमारे रोल मॉडल बाहर वाले हैं, टीचर्स हैं और हमारा पीयर ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं। अगर वहां पर वो अप्रूवल नहीं मिल रहा है, हमें वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ऑफ कोर्स दैट विल क्रिएट एन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन माय मेंटल हेल्थ। तो वहां से और बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो अगर लगे कि क्लास में कोई बच्चा ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, द चाइल्ड इज अलूफ, ही इज स्पेंडिंग टाइम अलोन, ही इज विथड्रॉल, फीलिंग आइसोलेटेड, then we have to be alert. So there are some warning signs for developmental issues in this period of middle childhood. So whenever you see that the child is not interested in other children, they are not able to make friends, and there is some sort of social awkwardness. तो वो भी हम आगे डिस्कशन में जब हम इश्यूज की बात करेंगे, विल कम टू दैट. सो दैट इज ऑल्सो रेड फ्लैग साइन. और अपार्ट फ्रॉम दैट, अटेंशन की हमने बात कर ही ली है, एकेडमिक डिफिकल्टीज को भी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है. देन ऑफ कोर्स वी have to be very attentive for their self-esteem. If they are having some intense fear for for doing task independently, kabhi kabhi bachchon mein aksar dekhne ko milta hai, they are so insecure, so they are clinging to significant caregiver, किसी एक से बहुत ज्यादा attachment है, तो ये सारे बहुत सारे emotional issues भी हैं. So broadly जब हम आज बात करेंगे तो हम एक तो हम developmental issues की बात करेंगे, जो developmental disorders होते हैं, जिसमें कि
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, बट उसके अलावा बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज होते हैं बच्चों में, जिसमें कंडक्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और बहुत सारे इमोशनल इश्यूज होते, और ऑफ कोर्स इन कंडक्ट के अलावा जब हम बिहेवियरल इश्यूज की बात करते हैं तो हम इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी को तो डिस्कस करेंगे ही वहां पर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस what to say इमोशनल इश्यूज. जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो आई थिंक वो भी हमें थोड़ा समझने की जरूरत है. और जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में या एडोलेसेंस में, दोज आर इश्यूज विच आर रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन. ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे. नाउ डेज देयर इज टू मच too much concern of the parents and the teachers about these kids that they spend lot of time in front of the screen. उनका बहुत ऑब्सेशन हो रहा है गेम्स को लेकर, ऑनलाइन गेम्स बहुत ज्यादा खेलते हैं या बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इंटरनेट का. सो आई थिंक दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द इमर्जिंग और कंटेम्पररी इश्यूज विच वी शुड डिस्कस. एंड देन देयर आर इश्यूज ऑफ चाइल्ड सेफ्टी एंड चाइल्ड अब्यूज during this middle childhood period. I think उसको भी बहुत जरूरी है डिस्कस करना. Then फिर एग्रेशन, वायलेंस, ये तो सारे इश्यूज हैं ही जो एक मिडिल चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस तक भी आगे परसिस्ट करते हैं. तो हम थोड़ी सी बात बाद में इस पर भी कर लेंगे. So I think I should not give much time to further to this developmental milestone of the adolescence part, because probably you will have an extra session on the issues of late adolescence. तो आज हम जो बात करेंगे वो हमारा फोकस जो है वो हम ज्यादा मिडिल चाइल्डहुड पर ही फोकस करेंगे. और बस हाँ, लेकिन वहां पर भी we have to be very alert to know that what are those sudden changes which are occurring in the sleep and appetite of these kids. कभी कभी इस पीरियड में भी वो सब चेंजेस देखने को मिलते हैं. what are the sudden changes in their academic performance. कभी कभी school refusal is so common. It's so because what happened that at clinical level what we have observed that many of the time the kids, they are not coming for their emotional issues. एज अ पेरेंट, एज अ टीचर और एज अ काउंसलर तो शायद हम उन इश्यूज को तो इग्नोर कर देते हैं बच्चों के. तो बच्चा अगर डिप्रेस्ड है क्योंकि वो हमें परेशान नहीं कर रहा है, वो क्लासरूम को परेशान नहीं कर रहा है, दूसरे बच्चों को परेशान नहीं कर रहा है, सो देयर इज नो नीड टू गिव टाइम टू दैट चाइल्ड, देयर इज नो नीड टू रेफर दैट चाइल्ड टू फर्दर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. लेकिन हमारे पास जब बच्चे आते हैं वो कौन से बच्चे आते हैं जो जिनके अटेंशन में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उनके एकेडमिक सफर कर रहे हैं, हाइपर एक्टिव हैं बच्चे, इंपल्सिव हैं, तो क्लासरूम में या टीचर्स को परेशान कर रहे हैं, अथॉरिटीज को परेशान कर रहे हैं. या वो बच्चे, कभी ऐसे बच्चे भी आते हैं जहाँ सोशल विड्रॉल बहुत ज्यादा है और बच्चों का सच में पेरेंट्स या टीचर्स ने बच्चों को भेजा है, लेकर आए हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट सोशल विड्रॉल. बट ऐसा बहुत कम होता है. तो यूजुअली बच्चों का जो रेफरल होता है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर एकेडमिक इश्यूज, इट इज बिकॉज ऑफ द कंडक्ट इश्यूज, और इट इज बिकॉज ऑफ द इनअटेंशन और इश्यूज अमंग द चिल्ड्रन. तो सो दिस ये पूरा एक चीज थी. बट व्हाट आई वांटेड टू फोकस दैट देयर इज इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ नॉलेज ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंटल स्पैन ऑफ द चाइल्ड, because it is the responsibility of every one of us, every stakeholder or a health worker who are dealing with the child. They should have a thorough knowledge about the normal milestones in all the domains, and we should be able to distinguish between the age appropriate normal behavior versus what are the problem behavior or what are the red flag signs for those developmental issues. So I think before proceeding further for the broadly behavioral and emotional issues, I think I will request Aparajita to start from a small video जिससे हम थोड़ा सा sensitize कर पाए सबको that what role each one of us are playing in the life of each other. कैसे हमारा role as a, मैं तो एक क्लिनिशियन हूँ, पर जो लोग यहाँ पर
इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या सुन रहे होंगे, उनमें से या तो बच्चे हैं, तो as a children in the classroom, what important role we are playing, how we can make a difference in another person's life, या एज अ पेरेंट और एज अ टीचर और काउंसलर हम वो डिफरेंस कैसे ला सकते हैं. सो आई थिंक अगर हम हमारे डिस्कशन को उस पर फोकस करके और हम बस इस चीज पर थोड़ा सा अलर्ट रहें कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि बच्चा जब एक नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस से डेविएट कर रहा है और हम कैसे उस बच्चे को मदद कर सकते हैं विद अवर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स. तो हम अपना डिस्कशन आज पूरा वहीं पर रखेंगे. फील फ्री टू आस्क any question, any query, whatever doubt you're having in your mind, because it's a platform where we, you know, all of us are sitting together. बच्चे भी हैं, I mean the students भी हैं, teachers भी हैं, counselors भी हैं, और शायद कुछ parents भी होंगे, बहुत parents होंगे, और health professionals भी हैं. So हम लोग मिलकर, I think it's a very ideal platform where we can discuss various issues. और हम आपकी नजरों से भी ये समझना चाहेंगे कि what are the issues you people are facing as a teachers, as a counselor, or as a students. So I will request Aparajita to Yes, ma'am. take a lead from here to proceed for the video first. I think वहां से फिर हम अपना discussion initiate Sure, करते हैं. ma'am. Sure, ma'am. As she stood in front of her 5th grade class on the first day of school, she told the children an untruth. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. However, that was impossible because there in the front row, slumped in his seat, was a little boy named Teddy Stallion. Miss Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he didn't play well with other children, that his clothes were messy, and that he constantly needed a bath. And Teddy could be unpleasant. It got to the point where Miss Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, making bold X's, and then putting a big F at the top of his papers. At the school where Miss Thompson taught, she was required to review each child's past records, and she put Teddy's off until the last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise. Teddy's first grade teacher wrote, "Teddy is a bright child with a ready laugh. He does his work neatly and has good manners. He is such a joy to be around." His second grade teacher wrote, "Teddy is an excellent student, well liked by his classmates, but he is troubled because his mother has a terminal illness, and life at home must be a struggle." His third grade teacher wrote, "His mother's death has been hard on him. He tries to do his best, but his father doesn't show much interest, and his home life will soon affect him if some steps aren't taken." Teddy's fourth grade teacher wrote, "Teddy is withdrawn and doesn't show much interest in school. He doesn't have many friends, and he sometimes sleeps in class." By now, Miss Thompson realized the problem, and she was ashamed of herself. She felt even worse when her students brought her Christmas presents, wrapped in beautiful ribbons and bright paper, except for Teddy's. His present was clumsily wrapped in heavy brown paper that he got from a grocery bag. Miss Thompson took pains to open it in the middle of the other presents. Some of the students started to laugh when she found a rhinestone bracelet with some of the stones missing and a bottle that was 1/4 full of perfume. But she stifled the children's laughter
when she explained how pretty the bracelet was, putting it on and dabbing some of the perfume on her wrist. Teddy Stallard stayed after school that day, just long enough to say, "Miss Thompson, today you smell just like my mom used to." After the children left, she cried for at least an hour. On that very day, she quit teaching reading, writing, and arithmetic. She began to teach children. Miss Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind began to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in class. And despite her lie that she would love all the children the same, Teddy became one of her teacher's pets. A year later, she found a note under her door from Teddy, telling her that she was the best teacher he'd ever had in his whole life. 6 years went by before she got another note from Teddy. He then wrote that he had finished high school third in his class, and she was still the best teacher he ever had in his whole life. 4 years after that, she got another letter saying that while things had been tough at times, he'd stayed in school. He'd stuck with it and would soon graduate from college with the highest of honors. Again, he assured Miss Thompson that she was still the best and favorite teacher he'd ever had. Then 4 more years passed, and yet another letter came. After he got his bachelor's degree, he had decided to go a little further. She was still the best and favorite teacher he'd ever had. But now his name was a little longer. The letter was signed Theodore F. Stallard, M.D. The story does not end here. There was yet another letter that spring. Teddy said he'd met this girl and was going to be married. He explained that his father had died a couple of years ago, and he was wondering if Miss Thompson might agree to sit at the wedding in the place that was usually reserved for the mother of the groom. Of course, Miss Thompson did. And guess what? She wore that bracelet. It's The 3 one with o'clock. several rhinestones missing. Moreover, she made sure she was wearing the perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together. They hugged each other, and Dr. Stallard whispered in Miss Thompson's ear, "Thank you for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference." Miss Thompson, with tears in her eyes, whispered back. She said, "Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach until I met you." You can never tell what type of impact you may have on another's life by your actions or lack of action. Please consider this fact in your venture through life and just try to make a difference in someone else's life today. I believe this is one video
which may have touched your soul, which may have touched you in many ways. This video is basically focusing on the fact that, we as stakeholders of child well-being, we as people who are somewhere responsible for the emotional well-being, for the behavioral well-being, need to understand that our action and our lack of action can impact them enormously. So this was a video which I believe that all the teachers, all the counselors, and even students for the matter would realize that how much does a teacher, how much does a parent give, their emotional nurturance to the child so that they do well, they feel well, and they're heard well. So with this, we will be taking the program forward. In 1 hour, a very comprehensive overview has been given about the conditions, the issues. We have talked about the statistics, how much it's impacting children and even adolescents for that matter in the countrywide. So we will take it forward. I'll be sharing the presentation now. One aspect that I would like to highlight here is that the whole genesis of having this dialogue, having this interaction is for all of you to understand that we need to identify. The whole problem with the statistic and the whole problem is that everyone comes to the tertiary center for management. It's always important that pehle hi identification us red flags ka hum kar sake. And that is the reason that we are all gathered, that early intervention, early recognition plays a very, very important role, not only at school level, at a family level as well. Like it has already been stated by our honorable guest of honor today, Dr. Rushi ma'am, that the limit is not to do a diagnosis. We are not here to label. We are not here to give you a picture that आपके घर में शायद किसी को ये है या वो है. ये हमारा focus नहीं है. The focus is to just identify that maybe we have to go out, maybe we have to seek professional help, or maybe we have to be available for that particular child or for that particular human more than we thought we would. The promotion of goodness of fit, I think, is another thing that we have to learn today. हम expect करते हैं या हम ये विश्वास रखते हैं कि एक बच्चे को या एक इंसान को उसी तरीके से behave करना चाहिए जिस तरीके से हम चाहते हैं या जिस तरीके से समाज में कहा जाता है कि यही सही है. But somewhere we have to give that leverage to the child to be little naughty, to be little happening, to be crossing a boundary maybe a little bit, but with supervision, but with monitoration. I think that childhood, that level of happiness should be there with the child, keeping in mind that वो 4 Ds अफेक्ट नहीं हो रहे हैं. या 4 Ds का मतलब है डिस्ट्रेस फील करना, डिसफंक्शनैलिटी कहीं ना कहीं देखना, डेंजरस होना अपने प्रति किसी और के प्रति, और डेवियंस होना, मतलब जो हम आइडली भी एक्सपेक्ट करते हैं जो होता है सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में, उससे बहुत ही अजीब, उससे बहुत ही बिजार, उससे बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड जब इंसान लगने लगता है या बच्चा लगने लगता है. वो इन 4 Ds का आई थिंक हम सबको ध्यान रखना चाहिए, अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना चाहिए. ये सिर्फ एक क्लिनिशियन का व्यू पॉइंट नहीं होना चाहिए. आई थिंक ये हर एक इंसान का होना चाहिए, टीचर्स का होना चाहिए, काउंसलर्स का होना चाहिए, एंड इवन फॉर दैट मैटर अगर फैमिलीज में देख रहे हैं एंड दे वर्क समवेयर, वो भी बात उनको ये याद रखनी चाहिए कि हमें 4 Ds को आइडेंटिफाइड करना है. और आज जब हम स्पेसिफिकली बच्चों की बात कर रहे हैं तो मैंने जैसे कि कहा कि थोड़ा सा लेबल ना करना और थोड़ा सा इतनी विजिलेंस से ना देखना भी जरूरी है, बिकॉज एट टाइम्स लाइक ब्यूटिफुली स्टेटेड बाय रुषि मैम, वी ओवर डायग्नोस एंड वी ओवर लेबल पीपल ऑल्सो. सो that is very important. The third and the most important thing is to understand the why of the behavior. जैसे कि मैम ने कहा कि अग्रेशन, एंजाइटी या इरिटेबिलिटी, स्टर्बननेस, ये हमें बच्चों में आजकल देखने को मिलता है. रियलाइज ये करना है कि क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, कितने टाइम से दिख रहा है, ये बहुत जरूरी है. बिकॉज जब हम इनकी जड़ तक पहुंचेंगे, जब हम कॉजल फैक्टर तक पहुंचेंगे, जिसे हम एटियोलॉजी कहते हैं अपनी भाषा में, उससे हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हम इसको कैसे रोकें. So once we know from where it is coming, it gets easier for us to tackle it, to control it. This is, I think, one of the very important factor. Lastly, I would like to focus that our environmental condition, our situational factors play a very important role. When I'm talking about the environmental factor, yes, I'm highlighting families. Yes, I'm highlighting the school environment in which the child is, performing or being, because
दोस्तों के साथ रिश्ता कैसा है, ऑफ कोर्स दैट प्लेज अ मेन रोल, बट सिचुएशन में जहां पे भी बच्चा ये महसूस करने लगे दैट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज चैलेंजिंग और दिस पर्टिकुलर सिचुएशन सीम्स टू बी अ स्ट्रगल फॉर मी, वो लाइफ स्किल्स, वो कोपिंग मैकेनिज्म बच्चा कैसे इस्तेमाल करे सो दैट ही इज एबल टू हैंडल हिमसेल्फ एंड ऑल्सो नॉट गेट इम्पैक्टेड सो सीरियसली by the situational factors. So of course our intrinsic factors, our self mechanism, our coping mechanism needs to be really, really intact. So this is what the entire focus will be, and we'll proceed further. Behavior we see outside are only the tip of the iceberg. Like I have already mentioned, आपको aggression दिख रहा है, आपको destructive behavior दिख रहा है, आपको defiance दिख रहा है, but हो सकता है शायद इससे बढ़कर कुछ और हो, emotionally अंदर भरा हुआ हो बच्चे के, या there's some kind of a trauma maybe the child has gone through that you as a stakeholder, you as a teacher, you as a counselor need to identify. That is why I believe the quality time, the healthy interaction between the teacher student is so important, that it's not always about academics, it's not always about that this particular curriculum or this particular syllabus need to be completed. It should be beyond that. The initial 5 minutes of the class and the ending of the 5 minutes of the class should be given somewhere in interacting, in talking about something which is beyond science, which is beyond SST, which is beyond Hindi and maths. I think that is where, when the relationship is nurtured, when the relationship is, you know, beautifully amplified, I think a lot of things come in front of the teacher, come in front of the plate of the teacher, which she can really look up to. So that is what I feel we have to introspect, we have to, you know, be clear about. The manifestations of the concerns, like how it has been already stated quite well, to make it easier for you all to understand that कुछ इंटरनलाइजिंग कंडीशंस होती हैं, कुछ एक्सटर्नलाइजिंग होती हैं. इंटरनलाइजिंग की बात जब हम करते हैं, इट्स मोर अबाउट इंट्रिंसिक, like anxiety, like fear. And when we talk about externalizing issues, it's like it's about something which is outward, which is expressive, which can be seen by people, which is overt, like, you know, aggressive behavior, defiance behavior, जो आपको दिख रहा है, it's acting out. It could be in the form of disruption also, it could be in the form of fighting issues also, जो हमें दिखते हैं. So this, I think, is little easier for all of you to keep in picture. We have talked about these statistics, I think, very holistically. Hemlata ma'am has covered about recent statistics, so I think we can move ahead. I think this is very important. Like it has already been stated, one thing I wish to add is that there's no single cause for any issue. हम कभी कभी सोचते हैं कि बिकॉज उसके मम्मी पापा इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, दैट इज वाई द चाइल्ड इज लाइक दिस. वी कांट keep it so specific, we can't keep it so rigid that A plus B leads to C plus D. No, with the mental health, with the brain, because it's a very complex phenomena, it's a very complex system, we have to understand that no single cause leads to any particular condition. अगर जैसे मैम ने आपको थोड़ा सा attention deficit hyperactivity के बारे में पिक्चर दिया, तो हम नहीं बोल सकते कि ये एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे को ये हुआ है. There are interplay of factors, there are different factors, जैसे हम biological, psychological and social factors कहते हैं. The interplay relationship of these factors leads to a condition, leads to a issue. And like there's no single cause, there's no single treatment, there's no single management, but a holistic management approach, a preventive approach, if taken, it leads to a very early recognition and very early intervention. काफी बार मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहूंगी जो हमको सुन रहे हैं, बचपन के जो इश्यूज होते हैं, जैसे हम अभी आपने हाइपर एक्टिविटी के बारे में सुना था, अगर वो मैनेज ना हो तो वो वर्क लाइफ में, वर्क प्लेस में बहुत ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करते हैं, एंड दैट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विद द कलीग. सिमिलरली जब छोटे बच्चों में हम ये सब चीजें देखते हैं या पकड़ते हैं कि ये कुछ ज्यादा है, द इंटेंसिटी इज टू मच, द डिग्री इज टू मच, इट्स परसिस्टेंस, it's not only seen at the school level, it is seen at the house also. He's doing this behavior with the friends also. When there is a pervasiveness, you know, it's affecting the all functioning, personal, social, occupational, academic, every functioning is getting affected. Then we realize that yes, it is a concern.
So no single treatment, but a holistic approach, a holistic societal school approach, if taken, it really leads to a lot of improvement. Early management, I believe, will cater better results and better outcome. जैसे कि मैंने आपको अभी बायो साइको सोशल के बारे में बताया था, थोड़ी सी जानकारी आई थिंक यहाँ पे बहुत जरूरी रहेगी, बिकॉज डेवलपमेंटल अप्रोच डॉक्टर रूशी मैम हैज ऑलरेडी गिवन इट. शी हैज गिवन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ हाउ माइलस्टोन्स आर सो इम्पोर्टेंट, विद एवरी from early childhood to somewhere adolescent. Ma'am has given a picture. This biopsychosocial-cultural matrix, if all counselors, all teachers have in their mind, it will really help you to understand your child a little more better and a little more in a lengthy way. So in biological, agar hum dekhe to every single thing, about the central nervous system, if there's some problem with the functionality, or there was some brain injury or a surgery was done, during the pregnancy, you came to know in the time of admission that this child has some concerns with when he was born, there was a postnatal prenatal complication that took place. So that will give you a little understanding that maybe this kind of a behavior or this kind of a scenario is not just because what I'm seeing it could have some causal factor, it could have some possible reasons as to why the child is behaving. So there could be health issues, there could be health related issues. आजकल हमको देखने को कितना मिला है, सुनने को कितना मिला है कि as early as children are being so obese, उनमें thyroid issues हैं, उनमें hormonal issues आ रहे हैं, PCOD लड़कियों में बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है, as early as 10 years old for that matter. So इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि a lot of health factors also has to do with your mind and behavior well-being. Okay, like I can give you a very simple example. I was talking to this child and the family. So बच्ची बार बार इसी बात के लिए घबरा रही थी. She was having general fearfulness and that anxiety, and very young as I think 8 years old. She was telling me that, ma'am, I'm very scared my mother will get coronavirus and I'm so worried. I'm so fearful about the disease, the health risk that's going on these days. So we have to, as a stakeholder, need to understand that what's going in the present scenario, what has been there in the past on the child's relationship, in the child's dynamic, in the family dynamic, we have to understand before we come to any conclusion, before we make or do any interpretation about the child well-being. We have to be appraised, we have to be aware about what, how, and where the child have been brought up. So this is, I think, very important when we come about is very, very essential. I'll give a simple example here. We all are going through this pandemic situation. It's kind of an obstacle, it's a kind of threat to many of us, people who have lost their jobs, in the families as young as children are seeing their father, their mother distressed, talking in a language which may not be as pleasant to anybody's ear. But we have to understand that same people with same kind of a scenario, same kind of a condition, do have resilient way of handling it. They have that coping mechanism that they end up saying this, that it's okay, this time will not last for long, we will come out of it. और ये छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कुछ नहीं होता मम्मा, हम ये कर लेंगे, हो जाएगा. So what I'm trying to give you a picture here is that all of us are different. Every child is different. Every child is very unique. There are individual differences. Not everywhere every child will have same kind of a pattern of behaving and feeling, and that is what we need to understand, that our prospect of helping them out should not be same. It will vary, it will be very individualized. एक चीज मैं और यहाँ पर बोलना चाहूंगी अपराजिता, because hello, yes ma'am, am I audible? हाँ, yes, sorry to interrupt, because जब हम बात कर रहे थे, so like beautifully Aparajita has raised this issue, and she's talking about that the child and adolescent mental health issues are best understood from the biopsychosocial model. तो आई थिंक ये बायोसाइकोसोशल मॉडल को और थोड़ा सा हमें डिटेल, थोड़ा सा बस और बताने की इस तरह से जरूरत है. ब्यूटीफुली यू हैव हाईलाइटेड द पॉइंट्स ऑफ क्या बायोलॉजिकल क्या मेकअप होता है या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं. बट आई वुड जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस मोर व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड
But now because we are talking about this biopsychosocial model, तो जो वो एक interplay of all these biological, psychological and social factors है, and how it play an important role in emerging those emotional and behavioral issues, that is very important for us to know as a stakeholder or as a health professionals, and for you people as a stakeholder who are dealing with the children and adolescents. So I think psychology teachers को और counselors को ना ये बात parents को भी समझानी होती है, that how these psychological factors are important in the causation. So traumatic events जो होते हैं बचपन में, जैसे कि अपराजिता ने अभी discussion में किसी context में बोला था, that they play very important role. So in clinical setting also, किताबों में जो लिखा है वो तो लिखा है, but in real clinical experience also I'm telling you, in one or another, every person, we found that there are some traumatic childhood life events which are responsible to great extent in the disorder in their adulthood, right? So हम थोड़ा सा उन traumatic life events को भी पहचानने और control करने की कोशिश करें जो childhood में होते हैं. Every child, or we can say most of the child, they face one or other kind of abuse, right? So it may be verbal abuse, it may be physical abuse, it may be emotional abuse. But as a parent और stakeholder, हमें ना पता नहीं होता कि this is a kind of abuse. हम लोगों को लगता है कि बस वो किसी को मार ही रहे हैं ना, physical abuse है तो वही एक abuse है, या sexual abuse है तो वही एक abuse है. But हम अपनी बातों से, हम रोजमर्रा की अपनी बातों से बच्चों को घर के अंदर या स्कूल में कैसे वर्बली या इमोशनली अब्यूज करते हैं, आई थिंक यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, राइट? Absolutely. एंड ऑफ कोर्स अपार्ट, हाँ जी, Absolutely, ma'am. Absolutely. या तो और जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि लॉस ऑफ अ पेरेंट और लॉस ऑफ अ केयर गिवर, they are very important reasons for emerging issues among the children. But हम जब लॉस की तो बात कर रहे हैं, पर जहां पर मौजूद हैं, जहां पर घर में पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से उनकी पेरेंटिंग स्टाइल में क्या कमी है, या उनकी तरफ से जो बच्चा निग्लेक्ट फील कर रहे हैं. सो इट्स नॉट ओनली द लॉस ऑफ अ पेरेंट, इट इज द निग्लेक्ट फ्रॉम द पेरेंट्स और द केयर गिवर विच इज रादर मोर इम्पोर्टेंट, है ना, इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड और इन द स्टेबल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. थोड़ा सा इसको भी हमें, अगर हम खुद भी एज अ पेरेंट्स इस बात को समझें और टीचर्स जो है वो बात ये सारी पेरेंट्स को समझाएं, दैट हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो आई थिंक इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. और उसके अलावा तो जो प्राजिता बता रही है कि बहुत सारे जो कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो लाइक जिनको हम नहीं रोक सकते, पॉवर्टी है, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट, राइट? ये जो हमारा कोविड-19 पैंडेमिक से जो इम्पैक्ट पड़ा है हमारे कंट्री की इकोनॉमी पर, हमारी फैमिलीज पर, हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर, उसको हम काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट. सो यू हैव टू learn to cope with those circumstances. Absolutely. So you can go ahead with the Prajita, please. Sorry to interrupt in between. मुझे लगा it's a valid point to use when we are talking about the interplay of these factors, na? So that's why. Very relevant point. Very relevant views were made, ma'am. Thank you. So, like very beautifully, ma'am has shared about the biopsychosocial understanding. One last perspective that I would like to mark over here for the socio-cultural factors. Family dynamics, like I've already stated it once, I would like to reinforce here once more. Family dynamics have a lot of important role to play. Because pandemic के time पे अगर हम देखें तो हमारी जो online education है वो भी घर से हो रही है, तो हमारे माँ बाप भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं. ये बच्चों ने काफी बार मुझे बोला है. So when I'm attending a online class, my mother is also sitting with me. So the education becomes very mutual. The learning becomes very mutual. So यहाँ ये बहुत फर्क पड़ता है कि what is our communication pattern, how effective we are when we talk to our children, when we listen to our children. As simple as I would like to state here with the experience that I've had so far, a lot of children says that घर पे आज पापा हैं, लेकिन पापा सुबह से लेके शाम तक काम ही करते रहते हैं, वो अपने स्टडी रूम से बाहर नहीं आते हैं. So वो अब ऐसा महसूस होता है कि घर पे होके भी वो मेरे साथ नहीं है. So I think यहाँ it's very important for all the teachers who are listening to us that the quality time
it's not about that your family is there at home and you all have that sense of belongingness every moment. It's the time that you interact, it's the time that you spend together, maybe the time when you sit together, you play games, you know, आप क्ले से कुछ बनाओ बच्चे के साथ, आप कुछ ड्राइंग बनाओ, जैसे पोस्टर मेकिंग में आई बिलीव जितने भी हमारे पास 9th इंटरनेशनल डॉलरसन समिट में सबमिशन आए हैं, I personally feel that it's not only the children who were working. I think it was their parents along, their teachers' guidance along, which contributed to this beautiful work that they have submitted to us. So somewhere I feel that the family dynamic has a lot to do. So जब फैमिली डायनामिक बहुत हेल्दी होता है, फंक्शनिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहाँ ज्यादा बातें होती हैं, हमारा आपका होता है, तेरा मेरा नहीं होता है, that is where I believe the beauty comes, and that is where that care, that warmth comes for the child. So with this, I think we can move forward. These were some of the factors that I wanted to share, which I think we have already covered it in quite detail. हम रिस्क फैक्टर्स की तो बात करते हैं, बट आई थिंक हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर, जिसे हम कहीं protective factors कहते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं, because we all have to understand that even if we have limitations, even if we have deficits, we do have strengths, we do have something to look upon, that this can be a source of help and this can be a source of support for me. So for example, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हैं and आपको पता है that इस बच्चे का ये कंसर्न्स हैं, ये चीजें मुझे लग रही हैं जो चेंज होनी चाहिए ताकि इसकी आगे की फंक्शनिंग और अच्छी रहे, वहीं पे आई थिंक द टीचर फोकस should not only be on red flags, but the focus should also be on the dynamic that if I focus on this, if I enhance this, if I stimulate these processes and these aspects, so uska bacche ka dhyan in strengths pe jayega aur uska support ki wajah se jo uski unhealthy functioning hai wo gayab hoti jayegi, wo kam hoti jayegi. So we as stakeholders need to understand that our focus should be on strength, our focus should be somewhere on the protective factors. Like I have stated it earlier, I would again keep this in picture that जैसे अगर फैमिली डायनामिक्स में हमको लगे कि ये चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं है, वहीं पे अगर आपको कहीं पेरेंटल सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और some specific parent with the attachment of the child is too high, it's good, it's nice, the attachment is healthy, you can focus on that parent in making or bringing change in the child. So what I mean to say is, suppose अगर मेरी दोस्त के साथ 8-year-old child says that I'm best friend with this girl and I really like her, I do everything with her, that girl can also be a support in bringing about change in that 8-year-old girl. So what I'm trying to say here is that protective functioning has to be highlighted. We can't always be problem focused. I know being a clinician, कहीं ना कहीं हमारे back of the mind में चलता रहता है कि शायद ये यहाँ से है, ये वहाँ से है, ये इधर से है, उधर से है. But जब teachers and counselors की हम बात करते हैं, ये मेरी request है आप सबसे that please be strength focused, because I still remember when I was talking to this one counselor of the school and I asked her, अच्छा मैम आप मुझे बताइए क्या बात आपको करनी है. She listed me 10 things about the child which was not right at all. She listed it in a way that it was maybe sounding little complaining. But when I asked her, all right ma'am, I think these are the 10 things that we together have to bring change in the child, modify in the child. What are the things that you think are very good, our strength, are something that we can focus upon so that we reduce that behavior? And then imagine what she was literally thinking. She was thinking for 5 minutes and she couldn't tell me that yes, 1, 2, 3, these things are really good in the child. The whole understanding here is that we have to be strength focused. I think this is a little important notion of keeping a check. It's like a reality check and a keeping check prospect for every counselor, I would believe, who are listening to us. आपके पास not sad करके एक एक्रोनिम है, तो आप इन चीजों को एकदम क्लैरिटी में रखिए. N मतलब क्या जनरल कंसर्न्स मुझे बच्चे में दिख रही हैं, the nature of the problem. It's little technical, I'll make it very easy for all of you. क्या कंसर्न्स दिख रही हैं. O is onset, कब से मैंने ये कंसर्न्स बच्चे में देखी, ये 1 हफ्ते पुरानी है, ये 1 महीने पुरानी है, या ये 1 साल पुरानी है, कब शुरू हुआ, that is the onset. P is treatment, basically कहीं इससे पहले हेल्प ली,
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं बड़े काउंसलर्स ने हेल्प करी है, स्कूल में जूनियर काउंसलर ने भी हेल्प करी थी, प्राइमरी विंग में भी हेल्प हुई थी, काउंसलिंग करता था बच्चा, प्ले थेरेपी करता था, ग्रुप थेरेपी सेशंस में भी होता था दोस्तों के साथ, बट इतना चेंज देखने को नहीं मिला. सो समवेयर व्हाट हैज बीन वर्कड विद द चाइल्ड व्हिच मे हैव नॉट गिवन द रिजल्ट्स शुड आल्सो बी केप्ट इन पिक्चर, बिकॉज वी डोंट हैव टू रिपीट द सेम वे. The methodology will change, the approach will change. S is severity. कितनी इंटेंसिटी कंसर्न की दिख रही है, कितना इम्पैक्ट है. द वर्ड आई हैव एडेड इज फंक्शनल इम्पैक्ट. क्या बच्चा ढंग से खाना भी नहीं खा रहा है, इधर उधर हिले जा रहा है? क्या बच्चा दूसरों को इतना डिस्टर्ब कर रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं? या बच्चा चुपचाप एक कमरे में कोने में क्लास में बैठा रहता है और कभी वहां से उठने की कोशिश नहीं करता, होमरूम पीरियड से 8th पीरियड तक? What is the functional impact that I think we all teachers or counselor can also look upon? And A is the aggravating factor. ऐसी क्या चीजें हैं जो इस बिहेवियर को बढ़ावा दे रही हैं या मेंटेन कर रही हैं? क्या ये मेंटेन कर रही हैं कि इस बच्चे के फ्रेंड्स नहीं है तभी वो एक जगह बैठे रहता है? सो एज अ टीचर माय फोकस बिकम ऑन हाउ आई इंट्रोड्यूस अ ग्रुप सेशन और रोल प्ले सेशन जहां ये बच्चा बाकी बच्चों के साथ खेले, बाकी बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो. सो दैट इज वेयर आई थिंक द मेंटेनिंग फैक्टर्स को हमें निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है, उधर से फोकस हटाना पड़ता है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, काउंसलर्स का. एंड द लास्ट इज आई थिंक ड्यूरेशन, विच हैज अ लॉट टू डू विद हाउ वी क्लिनिशियन हैव टू सी इट, कि अगर ये 1 साल पुरानी तकलीफ है तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. अगर ये 1 दिन 2 दिन पुरानी तकलीफ है तो इसका क्या प्रोग्नोसिस होगा, इसके आगे क्या हम फ्यूचरिस्टिक आउटकम क्या हो सकता है. काफी बार जैसे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जैसे मैम ने स्टार्टिंग में, रूशी मैम ने ओडीडी का जिक्र करा था, ओपोजिशनल डिफाइंस का किया था. अगर ओपोजिशनल डिफाइंस, जिसको हम कहते हैं नेगेटिविस्टिक एटीट्यूड, जो अथॉरिटी फिगर्स की तरफ होता है, जो टीचर्स की तरफ होता है, अपने पेरेंट्स की तरफ होता है, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ता जाए, अगर इसकी ड्यूरेशन बढ़ती जाए, तो ये कंडक्ट में भी रूप ले लेता है. कंडक्ट मतलब अ वेरी सीरियस कंडीशन वेयर वी सी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, वी सी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, चोरी करना, आग लगा देना, कुछ ऐसी चीज करना जिसके बाद बच्चे को शायद गिल्ट भी नहीं होता. इन सारी चीजों का आई थिंक हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, बिकॉज ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आई थिंक कंडीशंस के बारे में काफी फोकस ऑलरेडी हो चुका है. विल कम स्ट्रेट टू द एस्पेक्ट लाइक व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. How can we bring about change? How can we help the schools and the families? I think that is very, very important, and we'll focus on that. जैसे कि आप सब जानते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था उसमें ट्राइड मॉडल के लिए जिक्र करा था. WHO का स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आई बिलीव ऑल द टीचर्स एंड द काउंसलर मस्ट ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ. एक बार छोटी सी बात जो हम आज यहाँ पे आपसे करना चाहते हैं, बिकॉज आप सब हमसे बहुत दूर दूर हमारे कंट्री के कोने कोने से जुड़े हुए हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसके बारे में हम कहते हैं कि हम अवेयरनेस फैलाएं, हम सेंसिटाइज करें, हम प्रोग्राम्स करें. आप प्लीज गो बैक टू योर स्कूल्स. आपकी जब मीटिंग्स होती हैं, आप जब कोऑर्डिनेट करते हैं सारे टीचर्स, एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना, कितनी बार आपने प्रोग्राम्स करे हैं जहां आपने सिर्फ और सिर्फ बच्चों की इमोशनल और बिहेवियरल वेलबींग की बात करी है, कि आओ सारे स्टाफ रूम में बैठते हैं और अपने एक बार बच्चों के बारे में रिकैप्चुलेट करते हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं और कितना कितना हमें क्लास में देखने को मिल रहा है. लाइफ स्किल्स प्रोग्राम जो हम इनकलकेट करने की बात करते हैं, वो किस तरीके से हम और मॉडिफाई कर सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है प्ले थेरेपी की, जब हम बीइंग अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट प्ले थेरेपी की बात करते हैं, वो एक थेरेपी बन के एक इंटरवेंशन प्लान बन जाती है. एट टाइम्स आई रिमेंबर डिस्कसिंग इट विद डॉक्टर जितेंद्र नागपाल सर कि प्ले थेरेपी एक हर नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में एक मॉड्यूल की तरह क्यों नहीं होती, कि आज हम ऐसे मिनिएचर्स के साथ खेलेंगे और इन मिनिएचर्स की तरह बात करेंगे, उनसे लाइफ स्टोरी समझेंगे उनकी लाइफ की, और स्टोरी टेलिंग को एक ऐसा मॉड्यूल बना देंगे जहां बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके विदाउट एनी सेकंड थॉट. सो आई थिंक प्राइमरी वे में जब मेंटल वेलबींग की बातें, चर्चा, डिस्कशन, डायलॉग
बहुत ज्यादा होने लगता है स्कूल और फैमिली लेवल पे, तो वो जब आप नीचे 4 पे सिवियर प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, वहां तक हम नहीं पहुंचते. द होल कंसर्न इज दैट वो मेंटल वेलबींग जो स्टार्टिंग में प्राइमरी वाला प्रिवेंशन होता है, वहां हम थोड़े से लेट बैक हो जाते हैं. कभी कभी ये सोचते हैं कि अभी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमने भी बचपन में इतना बहुत देखा हुआ है, जब हम छोटे थे तो हम भी इतने स्टबन होते थे, हम भी इतने गुस्सेल होते थे, कुछ नहीं होता, बच्चा धीरे धीरे उम्र के साथ ठीक हो जाएगा. यहीं पे ये आई थिंक चीज है जो वी हैव टू चेंज. वी हैव टू ब्रिंग अबाउट अ लिटिल flexibility, that things have to be taken into consideration when we see. To just quote it very simply in front of you all, किसी काउंसलर से बात करना, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करना तभी जरूरी नहीं होता जब आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. आई पर्सनली फील दैट अ स्कूल काउंसलर is should be a one happiness room. It should be a one place where the child can go anytime they want. Anytime the child feel that मुझे आज मैम से जाके बात करनी है, आज थोड़ा सा कुछ मूड अच्छा नहीं लग रहा, आज सुबह सुबह मुझे मॉर्निंग ब्लूज हुए हैं, तो ये नहीं अप्रोच होनी चाहिए कि इस बच्चे को भी कंसर्न नहीं है तो हम इस बच्चे को भी नहीं बात करेंगे. द कंसर्न शुड बी दैट द रूम of a counselor, the availability of the teacher, role of a teacher as a counselor, highlighting कि वो इतना ओपन होना चाहिए कि कभी भी बच्चा बिना सोचे, बिना सेकंड थॉट रखे आपसे बात कर सकता है. बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कम्युनिकेशन, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम टॉकिंग, एक्सप्रेसिंग. एंड जब वो एक्सप्रेशन ना हो, वो रिलेशनशिप ना हो, तो बात में चेंज नहीं आता, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हमको देखने को नहीं मिलती. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग आई बिलीव, यस मैम, आई थिंक जब हम अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, जो हम एक प्ले थेरेपी की बात कर रहे थे एज अ मॉड्यूल इन द मतलब इन द क्लासरूम, जो कि एक कंपल्सरी हो जाना चाहिए. बट ऐसे बहुत सारे ना चाइल्डहुड इश्यूज हैं, लाइक जहां पर ये देखने को मिलता है दैट द चाइल्ड इज हैविंग डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड with the primary caregiver, right? Wahan par bhi research indicates that by introducing those fun-loving activities, play activities, that if those activities are introduced in the school, like at the school level, by adopting a plant or giving the toys to play to the child, yeah, adopting a pet, so that can also develop as an association or a sense of responsibility. एक self awareness बच्चों में बढ़ता है, और research ये बताती है that helps in creating a bond. तो वो जो एक bond है बच्चे का और primary caregiver का, वो भी इन सबसे strong होता है. तो I think जब research भी हमें ये बताती है कि कितनी importance है, और जैसे कि अभी अपराजिता ने discussion किया था कि क्योंकि पता है वही जो अभी अपराजिता ने जिक्र किया ना प्ले थेरेपी का इन द क्लासरूम्स, एक्चुअली थेरेपी में भी क्या होता है, जब हम बच्चों के साथ थेरेप्यूटिक मेजर्स में भी वी टेक द हेल्प ऑफ द टॉयज. तो उसको आई थिंक यहाँ पर लाने से पहले अगर हम स्कूल लेवल्स पर बच्चों को एक्सप्रेस करने की क्षमता भी वहीं से आएगी. अगर हम वो एक्सपोजर स्कूल लेवल पर प्रोवाइड करें, वो एक कंपल्सरी प्रोग्राम्स हों, मॉड्यूल की तरह हम डेवलप करें और बच्चों को इंट्रोड्यूस करें, आई थिंक दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ वेल, दे कैन रिलेट देमसेल्फ वेल टू दोस टॉयज, और फिर हमको भी उतनी आसानी होगी उन बच्चों को डील करने में. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट व्हाट अपराजिता हैज रेज्ड, which has जो evidence based भी है. That's what I wanted to make clear to everyone, especially all the teachers and the counselors, how they can make use of these play activities in the classrooms on a regular basis to deal with these kids. Absolutely. So that is the whole purpose, I believe, that in terms of knowledge, in terms of attitude, in terms of skills, why do we wait for a clinical psychologist or a specialized in the field to come in picture when everything can be start happening at the primary level? So that is the way we feel that अगर हम अपने curriculum में सोशो इमोशनल वेलबींग को हाईलाइट करें, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिलीज हुई है 2020 में, which will come in picture in the action very soon, we have to understand that सोशो इमोशनल वेलबींग का कंपोनेंट जब बहुत हाई होने लगेगा हमारी पढ़ाई के साथ, पढ़ाई कहीं पे भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो सेकंड ग्राउंड लेगी, वो थर्ड ग्राउंड लेगी, पढ़ाई के साथ साथ इंसान की पर्सनालिटी, उसकी वेलबींग आई थिंक शुड गो इंटैक्ट. And I think somewhere it should not be a point to say that it should play a larger, better role, because if I'm healthy,
if I'm mentally sound, if I'm mentally fine, I would give my 100% in my academics as well. So that is the important role I believe that हर टीचर को अपने करिकुलम खत्म करने से पहले, सिलेबस पे ज्यादा फोकस करने से पहले ये भी फोकस होना चाहिए कि उन 40 बच्चों में वो 2 या 3 बच्चे क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों उनका इंटरेस्ट इतना वॉन्डर ऑफ कर रहा है, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रैक्टेड, टू जस्ट टू हैव अ लिटिल रिसर्च टू अंडरस्टैंडिंग कि मैं थोड़ा सा इन बच्चों को इनकी किताबों, इनके नंबर से ज्यादा समझूं. आई बिलीव severe problems and disorders will not persist in India anymore. So this was the focus to give you all. And one thing that I would like to say here is this, that not a counselor alone can take care of the emotional well-being of the entire school, entire all the children of the school, all the students of the school. So workshop, orientation, काउंसलिंग सर्विसेज, उसका कितना फॉलोअप हो रहा है स्कूल में. अगर आप लाइजनिंग कर रहे हैं किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ, हाउ मच आर यू इन इंटरेक्शन, इन टच विद द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. इंडिविजुअली हम काफी तक जानते हैं कि छोटे बच्चों की स्क्रीनिंग होती है, 4th 5th क्लास 3rd क्लास में, जब हमें लगता है कि कुछ बच्चे इस स्वभाव के हैं, इस नेचर के हैं. अ लॉट ऑफ काउंसलर्स दे डू स्क्रीनिंग. सो वो स्क्रीनिंग कैसे आप कर रहे हैं और कैसे अपने क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट, लाइजन, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ आप टच में रह रहे हैं, these are very important things. पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स में ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रखना ऑन पॉजिटिव पेरेंटिंग, टू inculcate these parents that our relationship, our way of being, talking with the child has a lot to do for their mental health. आपकी availability होना बच्चों के लिए कितना जरूरी है. Ma'am has already spoken about abuse. I think sexual abuse is one such biggest concern that goes so many times unnoticed in the family. But उससे भी ज्यादा बड़ा कभी हो जाता है जब हम neglect करते हैं. एक बच्चा बार बार माँ के दुपट्टे को खींच के बोल रहा है, मम्मा सुनो सुनो मुझे बताना है आज स्कूल में क्या हुआ, और वही माँ बहुत बिजी और अवेलेबल नहीं है. Our lack of action of course has a lot of impact on the child. I think this has to be repeatedly shared with parents and also with the teachers at times. So these are few things which I feel has a huge role to play together. So teachers, head of the institution, counselors, even ancillary staff, support staff, जो guards दीदी होती हैं corridors में, सबका बर्ताव, सबका behavior एक बच्चा learn करता है, सीखता है. Because we have to remember that children are very observant, they're very perceptive. जो हम जैसे रहते हैं उनको वो ज्यादा पकड़ते हैं, and they start behaving in the same way. So our way of dialogue with them, how much punitive we are, how much thrashly we are talking, how much aggressive we are in our own approach, we don't realize, but children really grasp a lot of those things from us. So we have to be sensitive, we have to be warmth, we have to think twice whenever we say something in an impulsive way to the child, and that's very important, very very important. यहाँ कुछ चीजें हैं जो बहुत सोल्यूशन फोकस्ड हैं अब, दैट वी मे बी अवेयर दैट चाइल्ड को कहीं हाइपर एक्टिविटी हो रही है या ज्यादा अग्रेशन देखने को मिल रहा है, छोटी छोटी बात में बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहा है, स्टबर्न है, नहीं मैं यही लूंगा, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए. If we see all of this behavior, a lot of times, like I've said, the degree is high, the intensity is high, it's persistent. We have to understand that a specific help module need to be given. A clinical psychologist, a child psychologist, a counselor with experience have to be there in the picture to manage it. एक टीचर अकेले साइंस की डांट के या समझा के रिपीटेडली नहीं बच्चे को बदल पाएगी, बट एक मे बी काउंसलर वहां पे पिक्चर में आके बच्चे की प्रॉब्लम को डिटेल में समझ के टीचर की मदद से इनफैक्ट वो बहुत जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगी, एंड मे बी वील बी एबल टू हेल्प द चाइल्ड टू हेल्प हिमसेल्फ, which I think will be a bigger step. So like it has already been stated here, we have to structure children's activity. बहुत तरीके की एक्टिविटी जो मैम ने आपसे ऑलरेडी शेयर करी है. मुझे ऐसा लगता है जहां हम अब चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, प्ले थेरेप्यूटिक भी होता है, कॉग्निटिवली हेल्प भी करता है, सोशली भी बच्चे को हेल्प करता है, साइकोलॉजिकली भी बच्चे को हेल्प करता है. सो प्ले कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम, as a foreground, even to develop a relationship with the child. So play में ही बड़ी सारी activities आ जाती हैं, जैसे कि आप NEP में देखिए उन्होंने कितना focus करा है कि gardening करिए, vocational aspects पे focus करिए. Similarly, play for the as early children can be used
to bring about a lot of skill, to help them nurture their self in a better light. So ये सारी एक्टिविटीज बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं. पेरेंटल मॉनिटरिंग पे हमने बहुत फोकस आज आप डिस्कशन में किया है. Encourage children's involvement is very important. Like you all are aware कि आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है. काफी बार ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में बच्चे थोड़ी गेम्स भी खेलते हैं लैपटॉप्स पे, फोन्स पे, बट कितना इन्वॉल्वमेंट बच्चों की चीजों में हमारा है, हमारी कितनी मॉनिटरेशन, हमारी कितनी सुपरविजन है. लाइक आई कैन जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हियर. एक बच्चा है 7 साल का, बहुत गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा आता है, वो सबको मारता है, ऐसे पीटता है. और जब मैंने उनकी मदर से जाना सारी बातें, तो मदर ने ये शेयर करा कि इसको WWE देखना बहुत पसंद है. ये सारी वीडियो गेम्स वैसी देखता है, फाइट्स वाली, गुस्से वाली, जिसमें एंगर है, जिसमें वायलेंस पोर्ट्रे हो रहा है. सो वी एज पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे वो चीजें हैं जो हम अपने लेवल पे बहुत हेल्दी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं. उसको आप एकदम से मना मत करिए ये देखने को, नहीं तो वो अग्रेशन फिर देखेगा. बट और कौन सी चीज है जिसमें मैं बच्चे का इंटरेस्ट को डेवलप कर सकती हूँ, जहां उसका फोकस इनमें चले. फॉर एग्जाम्पल कुछ आर्ट रिलेटेड चीज हो जाए, कुछ म्यूजिक रिलेटेड गेम्स हो जाए, कुछ डांसिंग रिलेटेड हो जाए, कुछ ड्रामेटिक्स रिलेटेड हो जाए, एनीथिंग टू डू which can wander his attention from violence video games and portraying aggression. That involvement of a parent and a teacher can really help the child to help themselves. So this is important. And last, when we talk about giving appropriate rewards, I think conditioning का बहुत बड़ा रोल यहाँ प्ले होता है. किसी भी चीज को अगर हमें कंसिस्टेंसी देखनी होती है, it's very important to give immediate rewards. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिवॉर्ड्स आप हमेशा दें, हर वक्त दें, बिकॉज फिर उस रिवॉर्ड की जो होती है वैल्यू वो खत्म हो जाती है. प्राइमरी रिवॉर्ड्स हमको समझने बहुत जरूरी है, जिन्हें हम प्राइमरी रेनफोर्सर्स कहते हैं. इट शुड नॉट बी मनी रिलेटेड, इट शुड नॉट बी मटेरियलिस्टिक रिलेटेड. लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे तुम 10th में नंबर ले आओ, मैं तुमको आईफोन गिफ्ट करूंगी. वी मे नॉट बी फाइनेंशियली इक्विप्ड विद दैट, बट वी गिव सच false promises to children. This is wrong. This is somewhere you're not fulfilling that trust and faith that a child may have on you. So keep it very primary related. Keep it with some yummy delicious meal of his. Keep it related to something which is affordable, which you seriously feel that the child will bring about a change and the child will improve. The child will understand that it's somewhere mutual. If I want something, maybe I have to give love. If I have to give something back to my parents or my teacher, it's equally important. So that contract and everything that needs to be done, I think that needs to be done very sensitively. Nowhere we are investigating, nowhere we are interrogating the child, nowhere we should sound like we have the full authority on you and you are bound to be with us all the time. Ye rishte, I don't think इमोशनली और बिहेवियरली किसी बच्चे को हेल्प करते हैं. जब म्यूचुअली आप डिसाइड करते हैं गोल्स, जब म्यूचुअली आप बैठते हैं बच्चे के साथ, जब उनसे बातें करते हैं, a lot of things comes in picture where you feel that the child is more intelligent and bright to understand his own concern. The only problem is that the child is not understanding कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने आप की मदद करने. वहीं पे एक अडल्ट सुपरविजन, वहीं पे एक टीचर, एक काउंसलर जब पिक्चर में आती है, I believe the child will feel much better. So this, I think, is very, very important. Lastly, I think, Rushi ma'am, I would really like to highlight these points. This is one of my favorite slides, which I always ensure in all my training programs. Have this. Everyone will have a different viewpoint of the child's story. जब भी बच्चा अपनी बात बता रहा है, हो सकता है वो हमें एक फुल स्टॉप की तरह लगे कि इसके आगे कुछ नहीं है. हो सकता है वो एक कॉमा हो कि शायद और है, इसमें और कुछ बातें हैं. हो सकता है शायद जब बच्चा स्टेट कर रहा है वो खुद कंफ्यूज साउंड कर रहा है, वो खुद क्वेश्चनड है, दैट ही डजंट नो मे बी व्हाट इज नेक्स्ट और व्हाट शुड आई डू. काफी बार होता है जब बच्चा बात कर रहा होता है, ही इज वंडरिंग, ही इज नॉट रियलाइजिंग, एवरीथिंग इज कमिंग मगर आप, द थिंग्स गो हेवाय, देयर इज नो स्ट्रक्चर, देयर इज नो क्लैरिटी इन द थॉट्स ऑफ द चाइल्ड. We as stakeholders need to understand that it could be any of these. It's not supposed to be only full stop, it's not supposed to be a comma, it's not supposed to be a question mark. We should keep our attitude very flexible. It's very important. Nowhere I'm saying as a teacher, as a counselor, we lack the skill of assertiveness. Sometimes we sure need assertiveness, we need firmness, but at the same time we can't deny that the warmth
The unconditional regard for children should be maintained. A humanistic approach, I believe, should be a part of every teacher and a counselor, irrespective of anything in return. This is very important. So just have this picture that अगर आपको parent as a teacher और counselor, अब आपको parent कुछ बता रहा है, तो mother ठीक कह रहे हैं, father गलत कह रहे हैं, या father ठीक कह रहे हैं, mother सही नहीं कह रहे हैं, दोनों बहुत blaming sound कर रहे हैं. You have to understand that both of them have their stories, have their perception, have their view about the child. Where do you as a counselor, where do you as a teacher is able to make a common ground, where you are able to make that, this is something that I have to get both of them together. This is the viewpoint where I can have both of them together with me to help the child. That, I think, perception is very important. We nowhere are here to tell the teacher is wrong, or the father is wrong, or the mother is wrong, or maybe the counselor is not functioning, working properly. We as a team work together. We as a team need to help each other to, find solutions, to find prospect to something that we can look upon for the child and the child's well-being. Because सब कुछ शुरुआत बचपन से होती है, चाइल्डहुड से होती है. सारे बड़े से बड़े जितनी आप मेंटल हेल्थ कंडीशंस देखें, जब उनके हम कॉजल फैक्टर को समझते हैं, हम हमेशा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में जाते हैं कि was there any trauma, was there any particular episode in life which the child was not able to forget, and that is why has been a reason as to why he's behaving now in this. That is thing that is important, that childhood में rearing, nurturance, उसके लिए सुनना, उसके लिए available होना, they should be seen, they should be heard. And that is what the focus of Expressions India has been in inculcating in the capacity building programs for the teachers and the counselor, that they should be aware, they should be empowered, and they should be responsible. And that is where we see a lot of change, because पीयर एजुकेटर्स आप बचपन से बनना शुरू होते हैं. आप स्पेसिफिकली 8th क्लास में आके नहीं बनते हैं, आप 9th क्लास में नहीं बनते हैं. जब हमारे माइंड स्मार्ट प्रोग्राम में बच्चे आना शुरू करते हैं, हमें लगता है फर्स्ट क्लास से एक बच्चा पीयर एजुकेटर बन सकता है, एक बड़ी फ्रेंड बन सकता है अपने दूसरे फ्रेंड की हेल्प करने में. एंड दैट vision, that prospect, only a teacher in the school can provide, because you're catering that hours, that level of interaction with the child. And that is what I believe is very important. And I hope all of you who's listening to us, who's watching us, will remember this throughout your life in this work prospect. Yeah, good. Thank you, Aprajita. Well said. आपने जो ये लास्ट में जो I think मुद्दा उठाया, that each child is unique and they have different ways to express themselves and we have different ways to understand them. So I think वो जो अपराजिता ने एक बात कही ना कि कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, we have to be very alert about that part. जब तक हम बच्चों को वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं देंगे और जब तक हम अपनी रिलेशनशिप को उनके साथ नर्चर नहीं करेंगे, तब तक बच्चे अपनी बात हमको कभी बता भी नहीं पाएंगे. और जैसे कि हमने शुरू में डिस्कशन किया था ना, जहाँ से शुरुआत हुई थी, कि बच्चे हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जनरली नहीं आते. So, चाहे आप टीचर्स हो या आप काउंसलर्स हो, they will never come to you by saying that ma'am I'm having this problem. ना, उनको तो अभी शेयरिंग की आदत भी नहीं होती है और उनको पता भी नहीं होता है that it's a problem. That is only we know that it's a emotional problem or it's a behavioral problem or it's a behavioral or emotional issue. So हमको समझने की जरूरत है, हमको उनको वो environment provide करना है कि they should feel safe and secure. They should come to us, they should express themselves कि हाँ जी हमको ये प्रॉब्लम है. तो इसीलिए ना बताने की क्षमता में भी उनकी कमी आ जाती है. जब वो खुद उनको ये समझ ही नहीं है, वो खुद से ही कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को. और बहुत अफसोस की बात है, आज भी हम जब क्लिनिकल लेवल पर देखते हैं तो ज्यादातर जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं वो टीचर्स जो पेरेंट्स को भेजते हैं. टीचर्स ने बोला बच्चा क्लास में टिक के नहीं बैठता है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है या बहुत अटेंटिव नहीं है, जिसकी वजह से उसके एकेडमिक्स पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि एकेडमिक्स इन्वॉल्व हैं. तो जहां पर बात एकेडमिक्स से रिलेटेड होती है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली सारी फंक्शनिंग पर पड़ रहा है, तो एकेडमिक्स पर भी पड़ेगा ना, हमारे इश्यूज जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. तो जब एकेडमिक सफर करते हैं, दैट इज द ओनली पॉइंट व्हेन टीचर्स रेफर द चाइल्ड टू द पेरेंट्स बाय सेइंग दैट you go and consult some counselor, you go and consult some doctor for that. बट ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चा अब क्लास में बुझा बुझा सा रहता है, अकेला रहता है, वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है, अनसेफ फील कर रहा है, बहुत सारे इश्यूज है, या वो घर में निग्लेक्ट हो रहा है बच्चे का,
या कोई चाइल्डहुड अब्यूज है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, अपनी सेफ्टी को लेकर बच्चा परेशान है, इस तरह के इश्यूज को लेकर तो ना तो हम कभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं बच्चों के अंदर, और ना ही हम बच्चों को लेकर कभी किसी हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं. सो आई थिंक जाने की जरूरत भी नहीं है, अगर हम स्कूल के लेवल पर ही और घर के लेवल पर ही उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लें, समझ पाए कि बच्चे किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या नीड है. अगर हम उनकी अनमेट नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाए बस, और फिर हम उनको अपने लेवल पर वहीं पे रिजॉल्व करने की कोशिश कर पाए बाय प्रोवाइडिंग देम अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. और आई थिंक वहां पर टीचर और काउंसलर की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के लिए भी हो जाती है कि अगर टाइम टू टाइम हर 3 महीने में पेरेंट्स जो हैं वो विजिट करते ही हैं स्कूल को, पेरेंट टीचर मीटिंग में, राइट. सो इफ यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज सम पेरेंटल ट्रेनिंग programs which can be of course useful to improve their emotional and behavioral outcomes, तो आपको ये बात बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है कि हाउ इम्पोर्टेंट देयर रोल इज, उनकी ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है. जब अगर आप बच्चों के अंदर वो एक इम्प्रूव्ड इमोशनल और बिहेवियरल आउटकम देखना चाहते हो, सो आई थिंक उसके लिए बहुत जरूरी आपके लिए ये है कि आप पेरेंटल ट्रेनिंग पर अगर हम स्कूल्स में अब थोड़ा सा फोकस करना शुरू करें. जैसे हमारा फोकस रहता है कि हम जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएं टीचर्स या काउंसलर्स के, सो आई थिंक टीचर्स और काउंसलर्स के लिए फोकस होना चाहिए कि वो टाइम टू टाइम पेरेंट्स के लिए भी ऐसे प्रोग्राम आई थिंक रेगुलर बेसिस पर करवाएं. इन एवरी क्लास for every 3 months, if they are having some sort of a small workshop, only 10 hour or 45 minutes, collectively if you can have with the parents, so I think उनके लिए काफी यूजफुल होगा. और सबसे ज्यादा जो यूजफुल होगा वो हमारे बच्चों के लिए होगा कि आने वाले टाइम पर वो इस तरह के इश्यूज को ना फेस करें, और अगर फेस करें तो दे आर एबल टू कोप अप with all these issues. So I think this is the responsibility of all the stakeholders, whether they are teachers, whether they are counselors, whether they are parents or they are health workers, that we should provide a good atmosphere to our kids, a safe atmosphere to our kids. We should focus on their social and emotional development, and we should be able to identify if they are having any issue which is related to their emotions or behaviors, or anything they are having difficulty in their relationships, or they are having difficulty in their academics. So whatever issue they are suffering, they are having, we should be able to identify, and we should be able to provide that help to our kids. So that Absolutely. the message. Aprajita, perhaps there was some video you wanted to show. Do we have time? We have some yes, time. You can show that video also. Okay, ma'am. I think this video everybody will really like. I'll just play it. माँ को देखो, वो हर हाल में गाना गाती हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने 2 अलग-अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपनी टिफिन भी नहीं बांटता। मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया।
तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो। तुम अपने चुने तरीकों से ऐसी मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊं और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आए और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियां गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों। और कोई? अंतरा, हाँ? क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? हाँ? जरा उसके बालों को तो देखो। वो 2 अलग-अलग रंगों के रिबन बांधे हुए है। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी है और मेरी मदद करती हैं। माँ ने मुझे प्रेरणा दी जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ। मैं तो उड़ जाऊं आसमां के पार। अंतरा ने अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को। मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और सोचने की क्षमताओं की ही तरह महसूस करने की क्षमता भी आत्म जागरूकता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता किशोरावस्था में बहुत मायने रखती है। जिस उम्र में किशोर भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं। हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपको अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करनी चाहिए। आपके भीतर प्रेम और सहयोग की भावना है और आपका मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक भलाई बहुत मायने रखती है। I think this video was really overwhelming for a lot of you. यही फोकस रहा है इसमें कि बच्चे की स्ट्रेंथ को ढूंढना है। भले इमोशनली बच्चा कहीं वीक महसूस कर रहा है, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करें सो वो अच्छा महसूस कर सकता है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक द होल पर्पस ऑफ टुडेज सेशन वाज, टू आइडेंटिफाई दोस रेड फ्लैग्स दैट वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू have an understanding of what are those factors that we should keep into consideration when we are taking care of the child, because we all are responsible for child's well-being. And second is that the focus should not always be on those red flags. The focus should also be on the protective factors. And lastly, collaboration is very important. We as school, as family, as counselors, as professionals working in this field, we all have to work together. And once we work together at all the tried model, primary, secondary and tertiary, we really bring a lot of change in children. And the preventive mode से अगर हम काम करते हैं तो मैनेजमेंट और इंटरवेंशन की चिंता नहीं होती, फिर प्रिवेंशन में ही हमारा मैनेजमेंट हो जाता है. So this I think is very important. And with this, I would really like to thank Dr. Rushi ma'am for being present here with us, taking time, crucial time from her OPD at RML Hospital. I understand that government hospital में कितना rush होता है, कितनी responsibility होती है. So thank you so much ma'am for taking out your 2 hours here and being with us. Ma'am, please unmute yourself. I believe you would have some last word to share. No, I was just saying that no need to thank me, Aprajita. Rather, thank you very much
You had taken a very good live session on this issue, and it's always my privilege to be, part of your team to spread this awareness among the people. And lastly, बस हमने I think शुरुआत भी हमारी अच्छी वीडियो से हुई थी और एंड भी हमारा बहुत अच्छे वीडियो से हुआ है. Just give this message to people that it's not only important or required to focus only on the red flags. जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, हम हमेशा ये बातें करते हैं कि हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज हैं, बट कितना हम ये बातें करते हैं कि बच्चों की टैलेंट्स हैं, क्या इनर स्ट्रेंथ्स हैं, कब हम उनको आर्ट एक्टिविटीज में, प्ले एक्टिविटीज में उनके साथ खुद इंगेज होते हैं, खुद टाइम स्पेंड करते हैं. जैसे कि अपराजिता ने बीच में भी एक बार डिस्कशन में हम लोग जब बात कर रहे थे ऑनलाइन टीचिंग की आजकल, तो बहुत सारे पेरेंट्स में देखने को ये मिल रहा है कि पहले पता भी नहीं होता था कि हमारे बच्चों में एकेडमिक क्या इश्यूज हैं. मतलब फॉरगेट अबाउट द इमोशनल एंड सोशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, वी वर नॉट इवन अवेयर फॉर द अबाउट द एकेडमिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड. तो कम से कम ये एक प्लेटफॉर्म मिला जब हम उससे थोड़ा सा वाकिफ हुए कि हम में हैं. उसी तरह से हम अगर उनकी इमोशनल नीड्स या जो भी कुछ अनमेट नीड्स हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करें, और साथ साथ हम ये फोकस करें कि बच्चों के हमारे क्या टैलेंट्स हैं, क्या हिडन टैलेंट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेसेस के साथ साथ. और अगर हम उन पर काम करें सब लोग मिलकर, एज अ पेरेंट्स, एज अ काउंसलर, एज अ टीचर, सो आई थिंक बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. और आने वाले टाइम पे शायद फिर प्रॉब्लम्स पर हमें इतनी बोलने की जरूरत भी ना पड़े, बस हम ज्यादा चर्चा फिर हम बच्चों की स्ट्रेंथ्स पर ही करने लगे. आई थिंक वो भी एक दिन आएगा. सो थैंक यू वेरी मच. आई थिंक नाउ द टाइम इज आल्सो ओवर. It's Yes, already ma'am. 4 o'clock. Absolutely, ma'am. So I'll just give a last news of message to all the people who are watching us and listening to us. So we meet tomorrow for Sur Sangam, which will be about the dance. There will be screening of the dance videos in the morning, and in the later afternoon we'll be having a very important interaction with one of the very famous, renowned dancer of this field. So we all look forward that आप सब available होंगे, आप सब आएंगे. And I believe Dr. Jitendra Nagpal, sir, if you're willing to add something, sir, we are done with the program. No, Your valuable inputs, sir. I'm on the audio, but I was really very tempted to congratulate both of you, Dr. Ma'am and Rajita ji. Thank you, Hemlata ji. I think I could hear little bits and pieces of that, but it was a very great learning for me. And I feel that we have a heritage of a great country and a great India with us, and such a profound discussion which helped us to celebrate childhood. सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि हम बचपन को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वर्कशॉप में, और बहुत अच्छे तरीके से एक टीचर का जो रोल है, exemplified role of a teacher who is our education warrior in this tough times, has come out very well. And I feel that the new education policy has given socio-emotional development and foundation years of early childhood a very important turning point as the important pedagogy and important need for parents to learn. So these are the few important steps notified today. And I think this is also a call that school mental health awareness intervention calls for a larger intervention countrywide, and we are looking at this in the coming year. We are looking at this as a large-scale intervention, both at the early childhood pedagogy, the middle and the adolescent pedagogy. And I'm sure both of you, as very senior resource faculty, have given us an indicator that teachers may please write to us. आप लोग जो भी audience रहे हैं, teachers, you're all very great leaders for children to become aware, responsible, and empowered. Please do keep on giving suggestions. What kind of topics, what kind of areas, and what kind of knowledge and skills can we all develop together as modules for comprehensive school mental health in the coming time? So thank you, Dr. Rushi and Dr. Rajita for taking the lead forward. And special thanks to Dr. Rushi for actually bringing in so much of a vast
experience from both clinical and research, adding on to our team's constant endeavor to bring a change in the perception of childhood. Thank you so much. Absolutely. Thank you Thank so you, much, sir. sir. Thank you. Thank you so much. Thank you all. See you all tomorrow. Okay. Thank you so much.